Hello everyone, welcome to Unacademy. So in today's class we are going to discuss your 2018 OCS previous year question on your environment and ecology. So those who are live, please give a response so that we can continue our class. Please wait for a couple of minutes. So please wait for a couple of minutes, let others join, then we are going to start our class. So very good evening to all of you. So in today's class we are going to discuss 2018 paper on your environment and ecology. Already we have discussed with your 2011, 2015, 2011, 2015 paper, 2016, 2017 आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे आज क्लास में 2018 आमे डिस्कशन अपन करवा. सो तापर अनएकाडेमी विषय किसी अपन कही रखे. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सुचित्रा, पूजालिन एंड ऑल, वेरी गुड इवनिंग. सो अनएकाडेमी विषय टी कही रखे. अनएकाडेमी हूँ इंडिया सब लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओडिशार मध्य सब लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो थी कि प्रत्येक दिन मोर देन 50 आवर आम लाइव क्लास अपन हो. सो स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट रे इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज रे बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ ओडिशा से क्लास करुँच. प्रत्येक वीक रे अपन फाउंडेशन बैच, रिविजन बैच अपन हुए. एथरे मॉक टेस्ट सीरीज रही, लाइव टेस्ट क्विज अपन हुए. सो डिटेल एनालिसिस अपन देखिपारे. वीकली क्विज डाउट क्लियरिंग सेशन रोचे. सो टॉप एजुकेटर्स मैंने क्लास अपन करेंगे. सो गोटे ही सब्सक्रिप्शन आपन जदि नौचंदी अनएकाडेमी रे टोटल आपनकर ओडिसा जेकोसी एग्जाम पई आपनकर एक्सेस आपनकर रहिबो. आपन सब बैच को आपन एक्सेस कर परिबे. सो ओएस रा टोटल प्रीलिम्स, मेंस एवं ऑप्शनल बैच टोटल आपन कवर अप कर परिबे. ता सहित एएसओ, ता सहित सीटीपीडी, ता सहित सीपीएससी, ता सहित ओएमसी सब आपनकर एक्सेस मिल जिवो जदि गोटे ही सब्सक्रिप्शन आपन अनएकाडेमी रे नौचंदी. So these are the top educators of Unacademy who are going to help you in their best possible way so that you can crack your exam. Fine. So ये मान समस्त होचंदी आपनकर टॉप एजुकेटर्स जो माने कि आपनको अनएकाडेमी रे आपनको हेल्प करिवे. सो आप सेमानकर हेल्प नहीं आपन निजे निजे एग्जाम पई प्रिपेयर आपनका करि परिबे. सो अनएकाडेमी रे वन्स आपन जॉइन करछंदी एजुकेटर मानकर इंडिविजुअल कोर्स एवं एजुकेटर मानकर बैच कोर्स को आपन एक्सेस आपन करि परिबे. टोटल ओएस एवं एएसओ रो सबुतक सिलेबस टोटल मु मोर इंडिविजुअल प्रोफाइल आपन मिल जिवो ताको आपन कंप्लीट कर परिबे. प्लस आपनकर वेरियस बैचेस आपन हुए जो कि ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स माने सब क्लास आपन नियंती से गुडी को मध्य आपनकर एक्सेस ताको आपन करि परिबे. टोटाल एबे ओसीएस रा 400 वैकेंसी रही, एएस रा 400 वैकेंसी रही, आरआई अमीन रा 1200 प्लस पोस्ट वैकेंसी अपन रही. तो ये सब को अपन माने टारगेट ये सब एग्जाम को अपन टारगेट कर परिबे इन अनएकाडेमी यार सब वेरियस सेपरेट बैच अपन चलुची. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड से अपन आसिक अनएकाडेमी जॉइन अपन हो परिबे. सो अनएकाडेमी ईएमआई थ्रू रे अपन जॉइन पेमेंट अपन मध्यम दे परिबे. आमर एएस सेक्रेटरीएट पई अपन फंडामेंटल कोर्स रही जोटा कि सामर्थ्य बैच. सिमिलरली आमर आरआई अमीन पई दीक्षांत बैच रही. सिमिलरली आमर ओसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस पई आपनकर समीक्षा बैच रही. सिमिलरली आपनकर ऑप्शनल पई आमर अवलोकन बैच रही एंड आपनकर एएसओ हाईकोर्ट पई आमर प्रगति बैच रही. एमती बहुत सारा बैच अपन रही. ये सब आसिक अपन जॉइन कर परिबे. दोज हु आर इंटरेस्टेड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय रेफरल कोड दैट्स योर पुरुषोत्तम लाइव PURUSOTTM LIV पुरुषोत्तम लाइव इज माय रेफरल कोड. 1 ईयर पई आपनका कोर्स फीस होचे 500 रुपीस. 1 ईयर पई कोर्स फीस होचे 500 रुपीस एवं आपनका 2 ईयर पई कोर्स फीस होचे 300 रुपीस. सो ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल आपनकर होई परिबो जदि आपन पाखे क्रेडिट कार्ड आपन रहिथिबो. तो टोटल आपनकर 1 ईयर पई 6000 आपन कोर्स फीस एवं 2 ईयर पई 7200 होचे आपन कोर्स फीस फॉर ये 2 इयर्स. सो 500-300 रुपीस देकी पर मंथ आप अनएकाडेमी प्रिपरेशन करेंगे. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय रेफरल कोड दैट्स पुरुषोत्तम लाइव. एबे आसंतो फर्स्ट क्वेश्चन आपन आगे. थैंक यू एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सुचित्रा, पूजालिन, झिली, सुश्री, कार्तिक, लक्ष्मी, विश्वरंजन, मिस्टर बीन, बिगनेस एंड ऑल. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू.
जहाँ देखिए आप खुशी लगुच एत राति भी आपने क्लास करने आसुँच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एनलिस्टेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करेक्ट आंसर अपन कहतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एनलिस्टेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करेक्ट आंसर कौन हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रे कोट आप एनलिस्ट आप आगुरी आप चिलिका लेक रही है बट चिलिका लेक एवं ना रिमूव आप कर सारी सो करेक्ट आंसर अपन कौन हम डेफिनेटली ए विल बी योर करेक्ट आंसर दैट्स योर केवलादेव नेशनल पार्क राइट so that's your Keoladeo National Park. A will be a correct answer, so that you should remember. Yes, thank you. So Indian sites like your Keoladeo National Park, which is in your Rajasthan, Manipur, and your Loktok Lake, which is in your Manipur. So these are included in your Montrex record that you have to remember. Fine. So Keoladeo National Park एवं Loktok Lake दीटा होचे आपनकर हमर रामसर साइट रे दीटा जक जोरे कि इंडियन साइट्स जहाको आपनकर इंक्लूड कराई छे Montrex record रे. So Montrex record should be employed to identify the priority sites for positive international and national attention towards your conservation. केमिति प्राइमरली इस साइट्स को केमिति कंजर्व अपन करा जिवो, so that is our primary intention. Clear? बुझी पाले समझते. So let's go to next question. Which among the following is the most abundant greenhouse gas in the Earth's atmosphere? So correct answer दियंतु. Which among the following is the most abundant greenhouse gas in the Earth's atmosphere? Carbon dioxide, na water vapor, na sulfur dioxide, na tropospheric ozone. So A or B? So this is your B. A आपन का wrong answer. पिला माने बहुत ही confuse अपन कोनती carbon dioxide सहित, but primarily this is your water vapor that you need to remember, which is most abundant greenhouse gas in the Earth's atmosphere. Percentage wise जब अपन देखिबा, so आमे जदी अपन का देखिए फास्ट ऑफ ऑल होचे वाटर वेपर देन होचे कार्बन डाइऑक्साइड फाइन आग होचे वाटर वेपर तापर होचे कार्बन डाइऑक्साइड तापर होचे मिथेन तापर होचे नाइट्रस ऑक्साइड देन होचे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन देन होचे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लियर फाइन सो करेक्ट आंसर होचे वाटर वेपर हम नॉट योर कार्बन डाइऑक्साइड सो अपन मन रखिए वाटर वेपर हैज द मैक्सिमम ओवरऑल इफेक्ट ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट बट as water vapor is not directly increased or decreased by human activities we are not concerned about the amount of water vapor in the atmosphere सेति कि आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड को आपन माने कंसीडर करते बट एक्चुअली रे वाटर वेपर प्राइमरली कंट्रीब्यूट्स टू योर ग्रीन हाउस गैस राइट काली रो क्लास रे हम आपन पढथिले ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल राइट मन अछि तो ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग है सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है या सब क्वेश्चन सब पचार काली क्वेश्चन आम देखी आप मिथेन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल केते जदि कार्बन डाइऑक्साइड बेस 1 रहा करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम दैट्स योर मन अच्छी आंसर आप दिखाते कमेंट रे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ योर सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन करेक्ट आंसर कौन हम कहतु Which one of the following is a useful biological indicator of sulfur dioxide pollution? So that's your lichens, right? So lichen जो अपन रहला, so this is actually your biological indicator. Primarily lichen is actually very sensitive to your pollution. जो मन को विजिबल अपन हो नहीं जो मन को अपन स्लाइड विजिबल अपन हो नहीं सो राइट साइड अपन तीनटा डॉट अच्छी राइट सो राइट साइड अपन तीनटा डॉट अपन रही से डॉट को क्लिक करंतु देन अपन क्वालिटी अपन आसीबो से क्वालिटी के चेंज करंतु 144 अपन रही ताको चेंज करंतु 360 पिक्सेल को देन अपन सब जिंस देखा जिवो जो मन को किछि अपन क्लैरिटी रे किछि असुविधा होछि एनीवेज So correct answer it अपन कौन that will be a lichen. So the bio indicator responds to a pollution or your drought stress by changing shape, density or disappearing. So which allows scientists to calculate your atmospheric alteration. So atmosphere रे कौन changes अपन रही तो ये हमको bio indicator जो हम रहिला so it actually माने biological कौन changes अपन रही ये सब indicator अपन करे से तबेंगे हमें देखो bio indicator अपन कोचे जेमिति कि lichen होचे अपन गोटे primary bio indicator. Some species indicate low air pollution. So lichens as a group have a worldwide distribution and grow almost in any surface. For example, your soil, bark, roof tiles or your stone. Because lichens get all the nutrients from their air and many species are very sensitive to air pollution. So lichen populations disturbance upon rubber, so that will indicate your pollution, right? So that will indicate your pollution, so that you should remember. Fine. Primarily sulfur dioxide. Next question. The use of your microorganism metabolism to remove your pollutants such as your oil spills in the water bodies is known as your correct answer कहतु कौन हम The use of microorganism metabolism
टू रिमूव योर पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने पे आम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम आपंकर छाड़ू सो प्राइमरली जो कि आप वाटर बडीज प्राइमरली देखिए आप वाटर बडीज सो बहुत जो कौन सी गोटे सीप्र जदि किसी ऑयल वगैरह जब लीकेज होता है सो आप देखिए ऑयल लेयर गोटे गोटे पर्दा पूरा गोटे रही था फाइन ताको आप ऑयल स्पिल आप कहुए सो प्राइमरली से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुड़िक छाड़ती सो थ्रू देयर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज ये सब पॉल्यूटेंट्स गुड़िक से कौन करते ना रिमूव आप कर दिखती सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज बायो रिमेडिएशन बेसिकली दिस इज एन थेरापी दिस इज एन रिमेडिएशन दिस इज एन ट्रीटमेंट टेक्निक से बायो रिमेडिएशन आप कहे बिकज प्राइमरली वी आर यूजिंग योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट द पॉल्यूटेंट्स राइट सो अपन करेक्ट आंसर अपन हम बी बायो रिमेडिएशन सो इट इज द यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to bacteria and fungi to degrade the environmental contaminants into less toxic forms. So microorganisms may be indigenous to a contaminated area or they may be isolated from elsewhere and brought to be contaminated site. माने either आपनकर कोनोसी जगह microorganisms आनी कि आपन से जगह आपन छाड़िबे बा पर्टिकुलरली सेही जगह आपन microorganisms मध्य मे भी आपन हेई परंती जो सब इंटॉक्सिकेंट्स आपन रहिथिबे ताको आपनकर कोन करिवे नै माने आपनकर प्यूरिफाई आपन करिवे फाइन सो से माने आपनकर degrade अपन करिवे फाइन सो दिस इज द टेक्निक ऑफ योर बायो रिमेडिएशन सो दैट यू शुड रिमेंबर क्लियर यस सो लक्ष्मी रेणु कार्तिक एंड ऑल इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट रन फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली दैट्स योर करेक्ट आंसर कौन हम कहतु इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट रन फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर कौन हम कहतु वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर जॉइनिंग समस्त को शुभ संध्या क्लास सारा पर शुभ रात्रि हो ठीक है इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट रन फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली दैट्स योर स्पाइस जेट दैट यू नीड टू रिमेंबर फाइन सो गोटे फैक्चुअल बेस्ड इनफॉरमेशन मन रखु स्पाइस जेट ऑपरेट्स इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली दैट यू नीड टू रिमेंबर ये क्वेश्चन आम ओएस रे आसला ओके सो ये गोटे करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आम ओएस रे भी आसला राइट नेक्स्ट वन देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी वाटरफाउल इन इंडिया करेक्ट आंसर दियंतु so correct answer दियंतु which among the following is one of the largest wintering ground for the migratory waterfowl in India so correct answer hobo आपनकर दैट्स चिलिका लेक ओडिशा राइट सो ब्रैकिश वाटर लेक सो ब्रैकिश वाटर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जदी क्वेश्चन सब पचारे करेक्ट आंसर कोन होबो दैट्स योर चिलिका लेक सो मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुरी खोर्धा गंजाम राइट सो डिस्ट्रिक्ट सहित आपन चिलिका लेक आपन लागिছে चिलिका लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन योर वर्ल्ड सो दैट यू शुड रिमेंबर Chilika Lake is the largest wintering ground for the migratory birds on the Indian subcontinent. It is one of the hotspots of the biodiversity in the country. सेति पे कि आपनकर मिलियन माने आपनकर हजार हजार संख्या रे सो सब आपन माइग्रेटरी बर्ड्स गुडी आपन आछन जर पे कोनोसी क्लाइमेटिक चेंज आपन हुए सो विंटरी ऑन योर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स फाइन सो चिलिका लेक इज फेमस दैट यू शुड रिमेंबर नेक्स्ट वन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट करेक्ट आंसर देंतो Which among the following is the unit measurement of your ecological footprint? So प्रायतः समस्त आंसर करेक्ट देछन्ती सुश्री विघ्नेश कार्तिक पूजालिन सुनील लक्ष्मी ज्योतिप्रभा अंडर सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट आंसर होचे आपन दैट्स योर ग्लोबल हेक्टेयर ऑलरेडी हम क्वेश्चन अपन करिछि कि नहीं ऑलरेडी आपन क्वेश्चन करिछि मन पड़छि सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अपन पछथला सो दिस कांसेप्ट और दिस आइडिया वाज गिवन बाय विलियम रीस आमे पढिछे ना विलियम रीस अपन ये कांसेप्ट अपन दैछन्ती एनवायरनमेंट इकोलॉजी क्लास रे हम डिटेल अपन पढिछे in your 1992 a concept अपन आसे ecological footprint so which is primarily defined by your global hectare so actually अपन कोन so that means आपनकर ecological footprint माने this is the amount of the biological productive land and water area an individual a city or a country or a region or all of your humanity uses to produce the resources it consumes and to absorb the waste it generates with today's technology and the resource management practices
सिंपली लेमैन भाषा देखा सो प्राइमरली ये हूँ आपंकर कौन डिपिक्ट आप करुचे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्राइमरली रिप्रेजेंट्स द इम्पैक्ट दैट एन इंडिविजुअल कैन हैव that a city can have or that a country or a region or all of the humanity can have on your mother earth, right? तो एक्चुअली आपनकर टोटल आपन केते एरिया आपन कंज्यूम आपन करूछंती फाइन से केते लैंड एंड वाटर आपनकर केते इंपैक्ट आपन पडुची माने आपनका पई बा आपनकर गोटे पर्टिकुलर सिटी पई जहां भी आपनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपन रहबो सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल जेमति कि आपन नेशन हला सोसाइटी हला बा आपन कोनसे एक्टिविटीज पई सो हमें कैलकुलेट आपन करि परिबा ecological footprint of a person is calculated by considering all the biological materials consumed and all the biological waste generated by that person in a given year गोटे लोक पई जदि मैं आपनकर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपन देखिबा तार आमे देखिबा जे से केते आपनकर लैंड एंड वाटर आपन यूज आपन करूची गोटे लोक गोटे पर्टिकुलर गिवन ईयर रे केते अमाउंट को से आपनकर केते अमाउंट आपनकर कंज्यूम आपन करूची एवं केते बायोलॉजिकल वेस्ट आपन जनरेट करूची इज दिस थिंग क्लियर सो दैट इज एक्चुअली these materials and waste each demand ecologically productive areas such as your cropland to grow potatoes or forest to sequester fossil carbon dioxide emissions and all of these materials and waste are then individually translated into an equivalent number of your global hectares ताको आपनका ग्लोबल हेक्टेयर में आपनका कोन करू ना ताको आपन मेजर आपन करू बुझी परछंती फाइन सो गोटे इंडिविजुअल बा गोटे कंट्री रा फुटप्रिंट आपन केते आपन रहउची केते से आपनका लैंड सी आपन कवर अप करूची केते गोटे केते वेस्ट आपन से जनरेट आपन करिवो फाइन सो केते एरिया से आपन कंज्यूम आपन करूची सो दैट इज नथिंग बट योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ a global hectare clear बुझी पाले समझते सो हियर A will be your correct answer clear here A will be your correct answer fine so this is the concept which is given by your William Rees that you need to remember let's go to next one Anuradha Sani is well known for her work in which of the following fields correct answer कोंतो जो माने भी वीडियो देखछन गोटे लाइक कर दियंतु जो माने भी क्लास अपन करूछंती जो माने भल लागुची टिके टिके लाइक कर दियंतु जो मानक भल लगुनि समस्त आउ टिके आपन देखंतु आउ टिके आगु को अपन क्लास सरू तापर इच्छा ले अपन लाइक करिवे सो अनुराधा सनी इज वेल नोन फॉर हर वर्क इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स करेक्ट आंसर होचे अपन दैट्स एनिमल राइट्स राइट सो करेक्ट आंसर होचे अपन बी एनिमल राइट्स सो प्राइमरली अनुराधा सनी वाज द एक्स चीफ फंक्शनरी and the head of the Indian operations of your PETA आपनकर रहिछि people for your ethical treatment of your animals right people for ethical treatment of animals तार एक्स चीफ फंक्शनरी आपन रहिथिले अनुराधा सनी एंड एंकर ऊपर क्वेश्चंस आपन पचाइतला सी इज एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट प्राइमरली दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड वाज द चीफ एडिटर ऑफ द इंडियन एडिशन ऑफ एनिमल राइट्स मैगजीन दैट्स योर एनिमल टाइम्स रो मध्य से आपन चीफ एडिटर तो करेक्ट आंसर आपन कोन होबा देन सो सी इज एन एनिमल राइट्स ओके सो एनिमल राइट एक्टिविस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर फाइन सो बी विल बी योर correct answer let's go to next one respiratory suspended particulate matter are the particles having diameter correct answer दियंतु it is less than 2.5 micrometer fine so respiratory suspended particulate matter okay fine PM10 fine so ये क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन अपन करिबा so primarily हमर यार ऑफिशियल आंसर अपन रहितला बी फाइन सो रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यार ऑफिशियल आंसर अपन को बी देथिला ओके सो यार डिस्क्रिप्शन अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल कहि रखे एक्चुअली हमर कोन हुए आमे हमर दीटा अपन रहि गोटे टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आउट होचे अपन रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सो प्राइमरली पार्टिकुलेट मैटर with particle size less than 10 microns which is known as your respirable suspended particulate matter or your PM10 can get deep into the lungs and can cause broad range of your health effects in particular respiratory and your cardiovascular illness so for that reason our official answer B अपन रहितला and this is the correct explanation fine so PM10 basically जते अपन माइन्यूट में देखिबा total suspended particulate matter PM10 जो अपन रहला फाइन सो दिस इज एक्चुअली हमर जो TSPM अपन रही फाइन सो टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अपन रही सो दिस इज कॉल्ड इज योर हमर PM10 पार्टिकुलेट मैटर अपन 10 माइक्रोन्स अपन जो रही सो ताको हमर टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अपन कहा जाउछि प्राइमरली जते अपन देखिबा इट इज योर लेस देन 2.5 माइक्रोन्स एक्चुअली जोरे कि हम हेल्थ हम लंग्स भीतर को अपन गले इट प्राइमरली कॉजेस योर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज
So it increases your respiratory system symptoms such as your irritation of the airways, coughing है, difficulty in breathing अपन है, बा lungs function अपन ठीक से काम करिबो नहीं फाइन अपन asthma अपन बहुत एग्रावेट अपन हे जिवो किछि अपन chronic bronchitis अपन डेवलप अपन हे पारे किछि cardiovascular system को अपन impact अपन पड़ी पारे and it may cause your premature death in people with heart or lung disease fine. So that you need to remember fine. Next होछ अपन देखंदो fire can be controlled by it is particulate matter होछ अपन this is actually less than 2.5 microns but हमर जो official answer अपन रहितला so this is less than 10 micrometers एथि पई कि because so particulate matters size less than 10 micrometers ताकू 10 microns ताकू अपन मध्यम कुहा जाय respirable suspended particulates पे अपन कुहा जाय बा ताकू अपन PM10 अपन कहूचे so basically PM10 is actually part of a total suspended particulate matter which is also called as a respiratory particulate matter बुझी परछन त PM10 so सेथि पई कि PM10 अपन ऑफिशियल आंसर हमर देइछि ओके PM10 एक्चुअली दिस इज एन सबसेट ऑफ ए टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ये हमर रही सो सेथि पई कि अपन PM10 ऑफिशियल आंसर अपन दे जाइछि फाइन. नेक्स्ट वन सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो बाकी हमर बहुत सारा बहिरे अपन देइछि PM 2.5 माइक्रोन्स लेस देन 2.5 माइक्रोन्स सो दैट विल बी माने अपन बुक रे देइछि रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बट हमर जो PM10 ऑफिशियल आंसर अपन देथिला सो दैट ये होछि तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओके. नेक्स्ट अपन देखंतो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग fuel air ना both A and B तो C होचे पंगर that will be a correct answer. So that's your fire can be extinguished primarily in three ways by removing either fuel or heat or your air fine air हटेबे बा अपन fuel हटेबे बा heat हटेबे then अपन फायर अपन हटिबो फाइन प्राइमरी अपन सोर्स को अपन हटेबा को पड़िबो एंड सोर्स होचे प्राइमरी अपन ऑक्सीजन फाइन. नेक्स्ट वन फूड रीच इन द रफेज मे नॉट हेल्प फूड रीच इन द रफेज सो प्राइमरली हमर बैलेंस डाइट रे किछि रफेज वाला डाइट हमको कंज्यूम करिया को पड़े राइट आमे होम साइंस ऑप्शनल अपन पढिसे सो व्हाट डज इट हाउ एक्चुअली इट हेल्प्स सो प्राइमरली इट एड्स बल्किनेस टू आवर फूड राइट सो फूड रे गोटे अपन बल्किनेस ऐड करे अपन रफेज आमे अपन पढिसे राइट फाइबर कंटेंट जाको अपन कहउछन्ती इंपोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन एंड ये क्वेश्चन हम होम साइंस ऑप्शनल अपन आसरछि. सो प्राइमरली रफेज रे मे भी अपन न्यूट्रिएंट्स अपन न थाई पारे बट एक्चुअली ये कोन करे ना अपन पेट सफा रोज सफा अपन खाइबो को पड़िबो नहीं राइट कि नहीं पेट सफा रोज सफा अपन खाइबो को पड़िबो नहीं राइट. सो पेट सफा अपन खाइबो को पड़िबो नहीं बिकॉज इट एड्स बल्किनेस टू योर फूड फॉर दैट रीजन इट प्रिवेंट्स योर कॉन्स्टिपेशन राइट कि नहीं इट सैटिस्फाई योर एपेटाइट एंड इट स्टिमुलेट्स योर पेरिस्टाल्सिस टू एलिमिनेट योर फेकल मैटर सो जहाँ भी अपन वेस्ट मैटर अपन रहला अपन बॉडी रो बाहर करिया पई कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करिया पई एंड अपन एपेटाइट satisfy अपन करिया पई सो रफेज रो अपन काम अपन रहिछि सो मे नॉट हैव योर न्यूट्रिएंट्स हमें पढिछे राइट इट मे नॉट हैव योर न्यूट्रिएंट्स बट एक्चुअली इट गिव्स बल्किनेस टू आवर फूड बुझि पड़छन्ती सो डी अपन दैट विल बी अ करेक्ट आंसर डी विल बी अ करेक्ट आंसर फाइन. नेक्स्ट अपन देखंतो सेरिकल्चर इज ए रियरिंग प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सेरिकल्चर इज ए रियरिंग प्रैक्टिस ऑफ that's your silkworm okay sericulture is a rearing practice of a silkworm that you need to remember ये क्वेश्चन अपन बारंबार अपन आसुची एंड ये क्वेश्चन एएस रे मध्य अपन आसीची सेरिकल्चर ऊपर एएस रे मध्य क्वेश्चंस अपन आसी सो दैट यू नीड टू रिमेंबर क्लियर. नेक्स्ट वन अपन देखंतु बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू वन इंक्रीज इन द नंबर और इंक्रीज इन द कंटेंट इन क्वांटिटी ऑफ सो बायो मैग्निफिकेशन माने अपन कोन हमें पढिचे काली अपन देखिथिले बायो अकोमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन में पढिचे राइट ये समस्त आंसर करेक्ट अच्छे कार्तिक चिरंजीव रिनू सुश्री लक्ष्मी सुचित्रा ज्योतिप्रभा सत्यव्रता विश्वरंजन जो मैंने समस्त आंसर दौरान समस्त बहुत बहुत धन्यवाद. बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सो प्राइमरली कौन हुए सो टिके टिपिकल क्वेश्चन अपन सो बायो मैग्निफिकेशन माने कौन ना आप टॉक्सिक लेवल आप बढ़िबो राइट सो टॉक्सिक लेवल्स आप धीरे धीरे कौन हम ना आप बढ़िबो राइट. सो बायो अकोमुलेशन कले आम पढ़ी गोटे ऑर्गेनिज्म से कौन टॉक्सिन लेवल आप डिपोजिट होची ताको आप बायो अकोमुलेशन आप कहजिवो एंड दिस इज कॉल्ड योर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्राइमरली गोटे ट्रॉपिक लेवल आउ गोटे ट्रॉपिक लेवल कौन हम धीरे धीरे ना टॉक्सिक लेवल डिपोजिट आप हम ताको बायो मैग्निफिकेशन आप कहुए. सो इट इज डिफाइंड एज द राइज और द इंक्रीज इन द कंटामिनेटेड सब्सटेंस बा योर टॉक्सिक्स आप कहि परिबे which is caused by your intoxicating environment. The contaminants might be your heavy metals such as your mercury, arsenic, pesticides and polychlorinated biphenyls, DDT and all. Fine. So एगुडी कहउछ आपनकर जेतबेले हमर फूड चेन रे आपनकर हायर ट्रॉपिक लेवल्स को आपन ट्रांसमिट आपन हबो सो देन इट विल बी कॉल्ड एज योर बायो मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट आपन देखंतो ब्लू बेबी सिंड्रोम
इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ये क्वेश्चन बारंबार आपंकर ओएस रे एएस रे आपंकर आछुची ब्लू बेबी सिंड्रोम इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ करेक्ट आंसर दियंतु ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू आंसर So correct answer is upon that's a nitrate. Thank you, Mr. Bean, Lakshmi, Karthik, Manoj, Jyotiprabha and all, Chiranjeev, Rinu and all, Jili, Pujalin, Vishwaranjan, Suchitra, Satyavrata and all, Manorama, Sunil's inspiration, bigness and all. Samastum congratulations. Blue baby syndrome is caused due to the excess of a nitrate that you need to remember. Fine. So blue baby syndrome होचे अपनकर this is caused due to the excess of nitrate. So जो मैंने भी अपन लेट रे जॉइन कले समस्या अपन थोड़ा थोड़ा देखिए तो blue baby syndrome it is caused due to the excess of nitrate. Then होचे biomagnification it refers to increase in the number or content quantity of your toxicants. And sericulture is rearing practice of a silkworm. Food rich in roughage may not help in providing your nutrients. Fire can be controlled by removing your both fuel and your air. Right. So fuel and air को remove कले fire अपन remove अपन हे परिबो. ये होची respiratory suspended particulate matter एकोटिक अपन स्टार मार्क अपन करिवे. So primarily हमर बही रे अपन मेंशन अपन करा जायछि. So this is actually less than 2.5 micrometer. Right. Actually भी 2.5 micrometers रो जते अपन pollutant level अपन कम रहला so ताको अपन inhale अपन जो हेले हमर primarily जे सब डिजॉर्डर अपन होछि. So ए अपन actually correct answer अपन हबा कथा. बट ऑफिशियल आंसर अपन रहितला बी एंड तारो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस अपन देछि जो कि अपन सहित शेयर करली. फाइन. सो पार्टिकुलेट मैटर 10 एक्चुअली दिस इज आल्सो अ टाइप और वेरिएंट ऑफ योर टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बट एठी अपन पीएम 10 को कंसीडर करा जाइछ अपन एज योर आरएसपीएम रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कंसीडर करा जाइछ कि बी अपन ऑफिशियल करेक्ट आंसर अपन दे जाइछ. ओके बाकी हमरा अनुराधा सन्नी होचन अपन एनिमल राइट एक्टिविस्ट देन होचन अपन ecological footprint it is primarily measured in a global hectare and migratory waterfall in India you will primarily observe in your Chilika lake that's in your Odisha. SpiceJet is the first biofuel powered flight run from your Dehradun to Delhi. Bioremediation which this is a technique through which microorganisms are used microorganisms through their metabolic activities they use to remove your pollutants from your such as your oil spills in the water bodies. Then lichen bio indicator of your sulfur dioxide most abundant greenhouse gas water vapor. Then Montreux record Keoladha National Park it is enlisted in the Montreux record that you need to remember. Okay so ये 2018 रो आमे डिस्कशन करले environment ecology रो question. So I hope this class is helpful. Those who are interested to join Unacademy don't forget to apply my referral code that's Purusottam Live PURUSOTTM fine. Wish you all the best. May God bless you all. Let's wind up this class. Thank you everyone. Have a good day. Bye bye. Yeah so please don't forget to hit a like once the class is over.